क्योंकि वो बहुत छोटे घरों के थे। 1,500 वाले दिल्ली पे काम करने वाले मजदूर रहे होंगे वो। उनके लिए सरकार ने दुनिया की बेस्ट जो हो सकता था उसकी लाइन लगा दी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर लाइफ, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यही चीज है जो हमको इंडियंस होने पे प्राउड करती है। जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया, और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। और आज वो नारा मुझे याद आ रहा है, वो स्लोगन मुझे याद आ रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा चौकीदार हूं। तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं चौकीदारी करूंगा। और चौकीदारी जो आर्मी सोल्जर है वीके सिंह जी और जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं धामी जी, उन्होंने चौकीदारी की है 17 दिन टनल के बाहर बैठ करके। 17 दिन की मेहनत और 17 दिन में 41 लोगों को रेस्क्यू करना, 41 परिवार के लोगों के को सांस में सांस दिलाना, 41 परिवार को दोबारा उसके सुपूत को वापस उसके घर भेजना बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। People sitting in Delhi who have 5 cars parked in the garage, right? Who have the carbon footprint of a dinosaur. 5 cars, 10 air conditioners, right? And these people worry about, the carbon footprint, and they worry about damage to the ecology in the mountains. Welcome to Pra News. Today we dwell into India's remarkable and one of the most dangerous rescue mission, considered one of the nation's most challenging endeavors. The Silkyara Tunnel in Uttarakhand became a harrowing sight as 41 workers trapped for 17 days since Deepavali morning were successfully extricated on Tuesday. The rescue operation, employing unconventional methods like the prohibited rat hole mining technique after high-tech machinery failed, marked a triumphant conclusion. Prime Minister Narendra Modi commended the resilience of the trapped workers and their families, as well as the courage and determination displayed by the rescue personnel. The global community, including many countries, extended congratulations to India for the successful operation. Stay tuned as we explore Pakistan's media reaction to this extraordinary event. देखिए, दिस इज कॉल्ड विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत कमजोर लोग थे, बहुत पैसे भी नहीं थे, बहुत ही गरीब लोग थे। टनल धस गया, धस जाने देते। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतना खर्चा किया, दुनिया के बेस्ट जो एक्सकेवेटर हो सकते थे उनको बुलाया गया, दुनिया की सबसे महंगी मशीनें बुलाई गई, डॉक्टरों की लाइन लगा दी गई कि एक भी आदमी नहीं नुकसान होना चाहिए हमारा। कौन थे ये? कि ये जो लोग थे ये सबसे डाउन ट्रॉडन थे, इनको वो सुविधा दी गई जो एक पीएम को सुविधा मिलती। दुनिया के बेस्ट टनल डिगर्स को, माइनर्स को, दुनिया के बेस्ट मशीन्स को गवर्नमेंट ने कहा जो लगता है लगाओ, वी वांट दीज बॉयज आउट ऑफ द डेंजर। एंड जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह देते हैं तो वो हो जाता है। और आज अभी आपसे जब हमने बातचीत की, वो 41 मजदूर थे जो फंस गए थे और उनको निकाला गया। ये है डेमोक्रेसी, ये है पावर ऑफ पीपल। लोग इंपॉर्टेंट जब हो जाएं, किसी भी आइडियोलॉजी से ज्यादा जब लोग इंपॉर्टेंट हो जाएं, समझिए वो उस दिन आपने सही फ्रीडम पाई है, उस दिन आपका जीवन सही हो जाए। आज मुझे इतनी गौरवान्वित हुआ ये फील करके कि वो बहुत छोटे घरों के थे। 1,500 वाले दिल्ली पे काम करने वाले मजदूर रहे होंगे वो। उनके लिए सरकार ने दुनिया की बेस्ट जो हो सकता था उसकी लाइन लगा दी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर लाइफ, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यही चीज है जो हमको इंडियंस होने पे प्राउड करती है कि हमारी सरकार ने ये नहीं कहा यार देख लो कुछ हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो क्या है, 40-50 1 लाख 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, 3-4-10 लोग ऐसे चले भी गए, क्या है? नहीं, every single life counts of Indian, every single Indian life counts. Why does this happen? And everybody knows that the Himalayas are a young mountain, right? And maybe the soil of the Himalayas is not so firm, and when you do too much of digging or too much of cutting along the mountainside, these slides happen, the falls of the soil, the rock happen. India trying to widen the road. Now there are 2-3 factors why India is doing that.
And a lot of environmentalists have said that, we should not do that. We should respect the environment. Now, unfortunately, all these environmentalists are sitting in Delhi, in Mumbai, in Chennai, in Calcutta, in the big cities. The kids go to school, right? They go to shopping malls and they go to pubs and restaurants during the weekend or during the weekdays. The hospital is close by. The problem is, a road is not just a means of connectivity. A road signifies progress. So where there is a road, there will be a hospital, there will be a school, there will be a college, there will be a market, there will be shops. All these things will happen because by nature, all these things happen along roads. There could be a rare occurrence here and there, but largely these things happen along roads. Which is why the government of India is trying to build roads, because roads carry with them prosperity. Right? So let's say if I were to be an environmentalist and I say that, hey, it doesn't matter. All these roads don't matter. What Uttarakhand deserves is clean air, pure air. Of course it does. But so do the people in Delhi. Don't the people in Delhi and Noida deserve clean air and pure air? Of course we do. But do we say that let's walk to work today and I'm not going to use my car? Or during peak summers, do we say that, okay, it's damaging to the environment, let me not use my air conditioner. Let me make do with a fan or a cooler. I will not use an air conditioner. Or let me not use a refrigerator, or what we know as a fridge in India. Let me not use a fridge. Let me use an earthen pot, a ghada in Hindi. We don't do that. But we want people in the hills and the mountains to compromise, because apparently they have the responsibility for global warming. And they are supposed to live their lives in misery just because we can talk about environmental damage sitting in Delhi. Now, I'll tell you something. We must find a middle path. It's important, ladies and gentlemen, to find a middle path out of this. Without a middle path, we are done. And what is that middle path? That middle path has to be taking care of the environment, but yet making sure that the roads reach, the furthest. What about the Chinese across the border? Because Chinese have really pumped in money and rammed up their infrastructure. Tomorrow, if push comes to shove, and it will one day, it will, the day is not far when there will be a skirmish or even a limited war between the Indians and the Chinese. We can never, rule that out. It can happen. And if that happens, and if we have no roads or we have small roads, how do you think an army can fight without lines of communication and lines of supply? एक तरफ ये 40 लोग थे जिनकी अभिषेक सर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 300 के करीब पाकिस्तानी थे जिनकी खबर तक नहीं थी पाकिस्तान वालों को कि वो शिप के अंदर कहाँ गए और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की जो है सीमाएं पार करके 4 बच्चों के साथ चली गई। पाकिस्तान को इंडियन मीडिया की खबर पहुंचाने से पहले तक कोई खबर नहीं थी कि पाकिस्तान के 5 सिटीजन कहाँ गए। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के बाकी शहरियों की, तो हर दिन न जाने कितने कहां से डंकी लगा के फरार होते हैं, कानों कान किसी को खबर नहीं होती। वहां 40 भी अहम थे, और यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले जो मरी वाली साइड पे वाकया हुआ है, उसके अंदर कुछ टीचर और बच्चे जो फंस गए, उसको लोकल सिटीजन्स ने जाके जो है निकाला है और उनकी हेल्प की है। आर्मी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सका वहां पे। तो मतलब हमारे पास इतने सोर्सेज ही नहीं थे कि हम अपनी ही लेफ्ट से जाके बच्चों को निकाल सकें। There is a limited amount of stuff that you can send to the borders by air. Very limited. Plus in the mountains there is a huge problem. Inclement weather. The time window through which the choppers fly is very limited. What you need there are roads. And this is your national security priority. Again, I'm not saying compromise fully on the environment. We must find a middle path. People sitting in Delhi who have 5 cars parked in the garage, right? Who have the carbon footprint of a dinosaur. 5 cars, 10 air conditioners, right? And these people worry about, the carbon footprint, and they worry about damage to the ecology in the mountains.